ma'am. Good morning, Rita. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? Yes, ma'am. Fine, ma'am. And you? Good, good. Thank you. So, your Tech Fest is going to start from tomorrow. Are you Yes, ma'am. participating in any of the event? Yes, ma'am. In Okay, business very good. quiz. Very good. Keep the spirits high. Very good. Very good. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I can see students are joining. Yes, Deepak has joined. Anything you want to ask or any doubt you have regarding Sales of Goods Act? Yes. Okay. No, ma'am. No, ma'am. Up to no Okay. any problem. Okay. Yes, five students have joined so far. I'll just wait for 1 more minute. Till the time you may ask if any doubt is there. Yes, good morning, Nisha. Good morning, Bache. If any question or anything you wanted me to discuss again, yes, please ask. So, have I shared the notes of Sales of Goods Act with you? Yes, please reply. Yes. Have I shared these notes with you, these PPTs with you, Sales of Goods Act? Okay, okay. So I'll share once the topic is over. Okay, No, ma'am. No, okay. ma'am. I'll share it. Okay, Nisha. Yeah, I got the response. I'll share it once this topic is over so that my notes in my own handwriting will reach to you. Otherwise, normal simple PPT will reach to you. I can No, do ma'am. one thing if you want. I can send you this PPT as well as once they are over. When once Sales of Goods Act is over, I'll share that PPT again. So it would be double, right? So you may keep one file as your notes, right? But meanwhile, keep noting down because these topics are law topics. You may forget if you are not maintaining notes. Okay, yeah. So eight students have joined. We may start it now. Okay, yeah. So students are still joining. Okay, I'll wait. Right. Let me present my screen now. Good morning, Rakshita. Good morning, Bache. Okay. So now you must be able to see the slide. Yeah. Is it visible? Yes, ma'am. Okay. Okay. So we were on to this topic. I was Yes, okay. ma'am. Yes, Okay. ma'am. So we were discussing about sale and agreement to sell. Now I was on to this point, like buyer bears the risk. Why under sale buyer bears the risk? Because goods have already been transferred from the hands of seller to the hands of buyer. So seller has no responsibility once ownership is transferred. So buyer bears the risk. If goods are stolen, if goods are lost, if goods are met with an accident, so goods loss is completely loss of the buyer, not the loss of the seller, because seller has already sold those goods. But when we talk about this agreement to sell, the seller is bearing the risk. Under this, why seller is bearing the risk? Because goods are still with the seller. Goods are yet to be ready, yet to be produced, yet to be handed over to the buyer. So goods are not handed over to the buyer.
So the complete responsibility under the agreement to sell is of seller, right? But whereas when we talk about sale, complete responsibility of the goods is of the buyer, because goods have already been given to buyer. Okay, bache? Is this topic is clear? Yeah. Yes, ma'am. Okay. So please understand this was the one topic, right? In the topic we have talked about what is the meaning of Sales of Goods Act, what is the definition given by law, what are the different features of Sales of Goods Act, what is the price importance, goods, very, very important, goods definition is very important. So goods types, right? Look at this. So what is not included in goods is included in Transfer of Property Act. Okay. So we have talked about the introduction of Sales of Goods Act, where goods are very, very important. In case you have any doubt about any topic, you may ask, because I'm going to start second topic today. Okay. So this was all about introduction. Okay, bache? Yeah, actionable claim. So what is included in goods? What is not included in goods? Right? What are the types of goods? Right? These are the types of goods, five, right? Then what is the difference between sale and agreement to sell? In case you wanted to ask any doubt, you're most welcome. Else, I am going to start second topic of the day. Yeah. Anyone having any doubt in these topics? Yes, ma'am. No, Okay. ma'am. Okay. Yes. Any question or any doubt? Yes. Ma'am, I have a query. Yes. Please ask. मैम आई एम नॉट मतलब मेरे को क्लासिफिकेशन थोड़ा क्लियर नहीं हुआ मैम. क्या हुआ दीपक? थोड़ा सा बताइए बच्चे क्या? मैम क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स. Okay, classification of goods. Yes, yes. Classification mein there are five types of goods, bache. Five types of goods are like existing goods are very much ready. They are in the possession of seller. Buyer goes to seller, sees the product, buys the product, pays the price, and those goods are now the property of the buyer. So existing goods are immediate transfer of ownership from the hands of seller to the hands of buyer. So the goods which are ready made available, those goods are called existing goods. Right, bache? So existing goods are present goods which are readily available in the hands of seller. Clear, bache? Yes, ma'am. Second is specific goods. When contract is made between buyer and seller, certain kinds of specifications are given by the buyer, right? So those specifications are generally known as stipulation. I need a product where these things must be there. I need a horse whose capacity to run is 45 kilometer per hour. So with the specification, जब आपने कुछ एक स्पेसिफाई कर दिया, गुड्स आइडेंटिफाई किए, जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, बट वो जो है वो कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ है, वो असर्टेन्ड है, मुझे इतनी क्वांटिटी इसकी चाहिए, मुझे इतनी क्वांटिटी इसकी चाहिए. So those kinds of goods are called specific goods. Please understand, specific goods may be or may not be available immediately in the hands of seller. They have to get ready or they may be available in terms of sample only. So specific goods are those goods whereby certain specifications, certain instructions are given by buyer to the seller. So these goods are normally called ascertained goods, जो आपने choose कर लिया, राइट. सो असर्टेन गुड्स और स्पेसिफिक गुड्स वो होते हैं जब आपने कुछ परचेज करना है तो आप अपनी स्पेसिफिकेशन दे रहे हो, आप उसमें कुछ ऐसा चाह रहे हो कि ऐसा हो जाए. जैसे अब आप नॉर्मली शैम्पूज देखते हो, आप गए हो मार्केट में, आपने नॉर्मल शैम्पू परचेज कर लिया, इट इज फाइन. आपने कहा कि मुझे ऐसा शैम्पू चाहिए विच इज वर्किंग ऑन डैंड्रफ, which is working on smooth hair, which is working like a conditioner also. So you are specifying to the seller that you need a shampoo like this. Just a minute. Those kinds of goods are called specific goods. Yes. Right?
So specific goods are basically when instructions are given by buyer to the seller regarding the goods to be purchased in terms of quantity, in terms of quality, in terms of title, in terms of certain stipulations, right? कि मुझे इस टाइम पे चाहिए होता है, जैसे आप नॉर्मली गुड्स कभी परचेज करते हो अमेजोन पे, अगर आपने वन टाइम परचेज किया तो वो एग्जिस्टिंग गुड हो गया। आपने अगर उसको सेव कर लिया और आपने कहा कि हर मंथ मेरे पास आ जाए, तो आपने कुछ स्पेसिफिकेशन ऐड कर दी उस गुड्स के साथ, तो दोज आर कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स। तो ऑप्शन होती है जैसे कि अगर आपको हर मंथ चाहिए तो दैट ऑर्डर विल बी ऑटोमेटिकली प्लेस्ड। तो कुछ ऐसी रेकरिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ ऐसी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि आप दे रहे हो सेलर को, दोज आर कमिंग अंडर स्पेसिफिक गुड्स। इज इट क्लियर बच्चे? यस मैम। राइट। तो स्पेसिफिक में कुछ भी स्पेसिफिकेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज रेडी टू सेल टू बी अ पर्टिकुलर रेडियो बियरिंग ए डिस्टिंक्टिव नंबर, तो डिस्टिंक्टिव नंबर इज स्पेसिफिक गुड्स, कि वो नंबर जो बी को चाहिए था वो ए के पास है, तो ए वो रेडियो सेल कर रहा है, सो दैट इज स्पेसिफिक गुड्स। तो अगर आपको ऐसा शैम्पू चाहिए था जो डेंड्रफ फ्री हो, जो जिसमें कंडीशनर भी हो, तो अगर आपको वो शैम्पू दिया है अगर शॉपकीपर ने, तो दिस इज स्पेसिफिक गुड्स। So what is the difference between existing goods and specific goods? Existing goods are always given without any instruction by the buyer. Generally, product is checked by the buyer and purchased by the buyer. That's all. Specific goods are ascertained first. Instructions are given first by the buyer to the seller. Then that becomes specific. So, what are the similarities? Similarities क्या है existing और specific goods में? Please be on time, else I have to move the window and get you admitted. Please be on time. Yeah. The basic similarity between existing goods and specific goods is goods may be readily available in the hands of seller, right? The only distinction is their buyer is not giving any instruction, any specification. Here buyer is giving specification. Any doubt now? नो मैम। Third is unascertained goods. Nothing is clear in terms of quantity, in terms of quality, in terms of identification. So when order is placed, nothing is cleared. Unascertained goods are when you are making a contract, you are not sure of quantity, you are not sure of quality. So you are simply visiting the godown and you are simply saying, okay, fine, I need 100 bags of this. Instead of checking whether the rice you needed is of specific quantity or not, you just simply say, okay, I need these, right? Sometimes we buy a cloth, right? हम जाते हैं, अगर 10-12 मीटर हमें कपड़ा चाहिए, तो हम कभी ऐसा होता है दान का देखा आपने और कहा कि ये 12 मीटर पैक कर दो। So you are not bothered about the quality of the cloth, you are not bothered about the price of the cloth. That kind of specification is not mentioned by the buyer. So that is called unascertained goods. Now what is the difference between existing goods and unascertained goods? Existing में buyer is going and checking the product and picking up the product. So quantity is very much specific. Unascertained में कुछ भी specific नहीं होगा। कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि इतनी क्वांटिटीज, कितने किलो हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कितने प्राइस का है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी जब कॉन्ट्रैक्ट बना है तो इट इज लाइक ए वेग कॉन्ट्रैक्ट, बट ऐसा हो सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड कि उसको अगर ऐसा है कि ए एंड बी आर एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, बाद में वो स्पेसिफिकेशन ऐड कर सकता है, बट जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है दैट इज नॉट देयर। सो अनअसर्टेन गुड्स का मतलब होता है गुड्स की क्वांटिटी, गुड्स की क्वालिटी, गुड्स का प्राइस इज नॉट स्पेसिफाइड बाय द बायर। इट इज सिंपली वो विजिट कर रहा है गोडाउन में, उसने जाके चेक किया, उसने कहा कि ये 100 बैग्स पैक कर दो, तो 100 बैग्स में राइस है, शुगर है और राइस की भी क्वालिटी लेवल है, तो उसने एज इट इज अगर बोल दिया है तो दैट इज समवेयर अनअसर्टेन्ड गुड्स, राइट बच्चे? यस, यस मैम। okay. Future goods, the goods which yet to be manufactured. So these are the goods which are not readily available. These are the custom based goods. Custom based goods are like when the order is given in terms of designer suit, in terms of designer lehenga, in terms of designer product, in terms of exclusive deal. So all those exclusive products
specially meant for specific customers are known as future goods. So future goods are yet to be ready, but on the requirements of the customer. Remember that future goods are custom based goods, right, bache? So these are the custom based. Yes. Custom based are when customer is specifying the specification. It is yet to be ready. Now you must be understanding कि future goods or existing goods, right? यहाँ existing goods are available. Specific goods में क्या difference है? Specific goods may specifications are given by the customer and goods may be available. Please understand, it is not yet available. Please understand, goods may be available that is specified by the buyer. Future goods are not available. That is specification given by the customer, but goods are yet to be ready. Nita Ambani said, I need a iPhone with a pink diamond. So pink diamond iPhone is not available. That is yet to be available. वो available होगा ही नहीं. So only difference between future goods and this specific goods. Specific goods may be available with the seller. May be available. वैसा शैम्पू हो जो कि आप चाह रहे हो, उसमें 2-3 आपने क्वालिटी वो आपको पढ़ा देगा. वो कहेगा कि सर देखिए ये शैम्पू में डैंड्रफ का भी कंपनी ने मेंशन किया है. इट इज एक्टिंग एज ए कंडीशनर ऑल्सो. So that may be available, but future goods are not available. They are yet to be ready. So these goods are called custom based goods. Right, bache? Yes, ma'am. Last is contingent goods. These are the goods which are dependent upon condition. As to if condition will be satisfied, goods will be delivered. If condition is not satisfied, not achieved, goods will not be delivered. So contingent goods are those goods which are dependent upon certain conditions to be fulfilled. If condition is not fulfilled, then goods will not be delivered. यानी कि अगर आपने कोई ऐसी कंडीशन लगा दी है कि यस अगर शिप आया, अगर उसमें गुड्स आए तो आई विल डिलीवर यू, तो इफ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी गुड्स मैटर होते हैं वो आर कंटिंजेंट गुड्स. राइट? सो कंटिंजेंट गुड्स वो हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट इज कंडीशनल. कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस फुलफिल हो गई, गुड्स विल बी डिलीवर्ड. कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस वायलेट हो गई, तोड़ दी गई, नहीं पूरी हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी डिलीवर्ड या गुड्स विल नॉट बी डिलीवर्ड. So this is dependent upon certain things to happen or not to happen in the future. Now what is the difference between future goods and contingent goods? Future goods में goods will be ready for sure. Customer has given the requirement, goods will be ready for sure. Contingent में specifications have been given and it may or may not be fulfilled. Goods may or may not be delivered. Any doubt? Yes. No, ma'am. All are clear? Yes. In case any student is having any doubt onto this topic, please ask. Yes. So introduction is clear. Now I am going to start the second topic, right? Yes. Okay. Now very important topic is stipulation, condition and warranty. When we talk about this word stipulation, somewhere I wanted to ask you first, what do you understand by stipulation? Yes, please ask. What is the meaning of stipulation according to you? Yes. Yes. Stipulation. Specific time. कोई कोई चीज एग्रीमेंट का मैम कोई कॉन्ट्रैक्ट मैम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो अपन को एक कंडीशन देते हैं स्पेसिफिक. हाँ वही तो कॉन्ट्रैक्ट Okay. का कंडीशन होता है डिमांड माने कॉन्ट्रैक्ट में क्या है क्या लिखा हुआ है वही चीज. Oh, stipulation. Very good. Very good. Somebody else, please. Yes. Yasha. Are you there, Yes, बच्चे? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
मैम जो हम जब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना, तो उसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लाइक ये होगा तो मैं उसके हिसाब से साइन करूंगी, तो वो जो कंटेंट होता है उसको ये बोलते हैं। वेरी गुड, वो वेरी गुड. Right, you guys are perfectly right. I have to work very less for this topic. Stipulation is the specifications of the contract. Please understand. When I use this word stipulation, that is specifications, right? Specifications of the contract. Yes. So stipulation is very much integral part of the contract. Very much integral. It is the specification given by the buyer to the seller for the contract. So number one, it is the specification. Number two, it is an integral part of the contract. Number three, it is specified by the buyer to the seller. And number four, it may be condition or warranty. Please understand, stipulation is of two types. One is condition, another is warranty. And last but not the least, stipulations are playing pivotal role for the actions. If stipulations are broken, violated, then seller may be sued. Seller may be called for the court proceedings. Seller may be having the right to bear the loss, bear the penalty, bear the damages, bear the price. So stipulation is one of the most important ingredient. Please understand. Just a minute. So this is one of the most important ingredient of the contract. जैसे एक goods important है, goods कैसे चाहिए, उसके लिए stipulation is also important. So stipulation is specifications of the contract given by the buyer. Right? Clear? Now stipulation may be this or may be this. What is condition? Condition is which has to be fulfilled. There is no scope of avoiding it. So any specification which is of utmost important is called condition. तो अगर उसने कह दिया कि मुझे व्हाइट कलर की कार चाहिए, व्हाइट कलर इज कंडीशन, आई नीड ए कार ऑफ व्हाइट कलर ओनली, then that is condition and it is important, and if it is not delivered, seller will be sued for the price. प्लीज अंडरस्टैंड, कंडीशन का मतलब है कि आपने जो एक बायर ने स्पेसिफिकेशन दी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो टूटनी नहीं चाहिए. दैट शुड मस्ट नॉट बी ब्रोकन. इफ इट इज ब्रोकन देन सेलर विल बी स्यूड. वारंटी, यस इट इज कोलैटरल, सेकेंडरी, प्राइमरी इंस्ट्रक्शन नहीं है. व्हाइट कलर की कार चाहिए इज कंडीशन. I need a car in between 10 to 15 of next month. वारंटी हो गया जिसमें स्कोप है, 10 को भी बेच सकता है वो, 11 को भी बेच सकता है वो, 15 तक भी बेच सकता है. सो दैट इज वारंटी. प्लीज अंडरस्टैंड, वारंटी में एक स्कोप है कि वेयर बाय सम एक्सटेंशन में ऑल्सो बी आस्क्ड, बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. So only when the buyer is specifying something, I need a car by 10th only, it is a condition. I need a car in between 10th to 15th, and in between अगर आपने extension भी ले ली तो वो वारंटी बन जाएगी, वो condition नहीं रहेगी. वारंटी is collateral which is not of that importance where condition is. But वारंटी अगर टूटती है तो yes, damages may be claimed. मैं इसके इस टॉपिक के बारे में आज आपको करवाने लगी हूं. So as far as meaning is concerned, this is a condition, this is a warranty. So any stipulation, any specification which is most important is known as condition. Any stipulation which is of least important is known as warranty. So least important is collateral. Collateral word is secondary. It is not primary बच्चे. Collateral का मतलब होता है secondary. और जब most important हो गया तो it is primary instruction. So any primary specification, any primary instruction is known as condition.
or any secondary instruction which is not of that importance, whereby extension may be asked, that is known as warranty. जैसे आपने अगर कह दिया कि yes I need a product during Navratras, so Navratras of 9 days is warranty, please understand. So in those 9 days anytime you can deliver the car, right? Condition is I need a car only on first Navratra or only on the last Navratra, that means in between you cannot deliver. So conditions and warranties are stipulations. They are, what is the common between them? They are stipulations, they are specification. But one specification which is of utmost importance is known as condition. And another instruction, another specification which is of least importance is of warranty. And it is the buyer who has to make condition or warranty. Any doubt? Yes? Ma'am, stipulations is specified by seller. No, No, sorry, by buyer. by buyer. Yes, bache? Yes. Okay, ma'am. Okay. They are specified. Both conditions and warranties are specified by buyer. Yes. Okay. Now, what is condition? Look at the definition given by this. According to section 12, subsection 2, condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract. Please understand, main purpose of the contract. The breach of which gives the right to treat the contract as repudiated. Repudiated means cancelled, right? Yes. अगर उसमें तोड़ हुआ, उसमें कुछ उल्लंघन हुआ तो कैंसिल हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बड़े आराम से. बायर इज नॉट ऑब्लिगेटरी टू मेक द पेमेंट. तो कंडीशन एक ऐसा एसेंशियल फॉर्म होता है, लाइक बायर वांटेड ए हॉर्स व्हिच कुड रन एट ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर आवर. So that is something specification in a specified manner. जहां पे वेग नहीं है, जहां पे स्कोप नहीं है कि उसको 45 मीटर पर आवर का ही घोड़ा चाहिए जो इतना तो दौड़ सके, राइट? मिनिमम इतना तो दौड़ सके, उससे ज्यादा है इट इज फाइन. अगर उससे कम है, अगर उससे कम दौड़ रहा है तो वो कंडीशन वायलेट हो गई, तो बायर के पास पूरा राइट है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का. यस, is it clear? So this definition, like I mentioned, his definitions are very specific. You have to learn it like this only. A condition is a stipulation, please understand, essential to the main purpose of the contract. If it is not adhered, if it is not fulfilled, अगर इसको नहीं माना गया तो बायर के पास पूरा राइट है to make the contract repudiated, cancelled. Right बच्चे? Meaning and definition is clear? Yes, ma'am. Okay. Look at this. What are the implied conditions? Yes. Implied conditions means these conditions are not specified by the buyer, but it is expected कि ये तो होगा ही, ये तो होना ही चाहिए. Condition as to title, condition as to description, condition as to sample, condition as to sample as well as description. ये सारे points मैं डिटेल में आपको करवाऊंगी. Condition as to quality, condition as to merchantability, condition as to wholesomeness. These conditions are implied conditions. These are not specified by the buyer when they are entering into a contract. These are implied. Seller has to fulfill these conditions on their own. अगर इनमें से कोई भी वायलेट होती है, कोई भी उल्लंघन करता है सेलर, तो बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, प्राइस वापस ले सकता है. कौन कौन सा? फर्स्ट इज एज टू टाइटल. कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब है जो सेलर चीज देगा वो उसका ओरिजिनल ओनर होना चाहिए. प्लीज अंडरस्टैंड. कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब है राइट टू सेल. यस, वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स. चोरी किए हुए गुड्स अपना बना के उसको बिल दे के नहीं कर सकता. Seller must be having the legible possession of the goods. It is very much clear. You cannot cheat the buyer. आप उसको जो है, there are certain markets where we know that we will get second hand product. Please understand. उसमें you cannot expect the title. उसमें you cannot expect the title. Please understand. Yes. So condition as to title means when there is
a right of the seller as an original where he has this to sell it, that is known as condition as to title. अब आप कहेंगे कि मैम जो सेकंड हैंड प्रोडक्ट होता है या जो ऐसे चोरी वाली मार्केट में सेल हो रहा है जिसमें बिल नहीं मिल रहा, तो क्या सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा? नो. When you need a genuine transaction, please understand the legal genuine transaction. Let me tell you. Legal buying transaction. For the legal buying transaction, you need a product with a bill. Please understand. बिल हो गया, इनवॉइस हो गया, जो भी आप कहना चाहें. तो सेलर जब आपको बिल दे रहा है, बिल का मतलब है कि ही हैज ए पोजेशन ऑफ द गुड्स जेन्युइनली एंड इज ट्रांसफरिंग यू दैट गुड. अगर आपको बिल ही नहीं मिल रहा तो फिर ये कंडीशन, फिर वो जेन्युइन ट्रांजेक्शंस आर नॉट देयर, फिर वो कंडीशन और वारंटी आर नॉट देयर, फिर तो प्रोडक्ट रिस्क आपका ही है, क्योंकि कोर्ट आपके केस को एंटरटेन नहीं करेगा. वो यही कहेगा सिंपल. यस मैडम, ये वायलेट होने से जो ये सब केस बनेगा, ये सिविल केस या क्रिमिनल केस, कौन से केस के अंडर आएगा मैडम? सिविल के अंडर ही आएगा. देखिए, क्रिमिनल तब आता है व्हेन देयर इज ए चीटिंग, व्हेन कोर्ट थिंक्स ऑफ. यस, नॉर्मली इट इज सिविल. मैंने आज मतलब न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि पुलिस ने 602 पेजेस की चार्जशीट मतलब कोर्ट में फाइल की. तो मैडम, इतने पेजेस की चार्जशीट क्या जज वाकई में पढ़ता है क्या मैडम? जज देखिए प्लीज, हाँ, जज का काम देखिए, आप उसको चैलेंज और उसको उस वे से नहीं ले सकते हो. यस, जज जो है वो चार्जशीट भी पढ़ता है और जज उसमें अपना ओपिनियन भी देता है. एवरी पेज रीडिंग इज इंपॉर्टेंट. तो केसेस आर नॉर्मली टेकन नॉट फॉर ए मंथ, फॉर द ईयर्स. तो जितनी चार्जशीट बड़ी होगी उतना ही जज का ओपिनियन उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. यस प्लीज. 602 पेजेस की चार्जशीट मैडम, अपन 6 पेजेस की नहीं पढ़ पाते कि आपको 602 पेजेस की चार्जशीट? वो जज बना है, आप ये भी तो सोचिए. पढ़ पढ़ के दे आर सराउंडेड बाय द बुक्स एंड दे आर सराउंडेड बाय द लॉ. So that is basically their environment. We as a, अगर आज हम देखें कि yes we are reading, तो हमारी बॉडी को जितना हम रिलैक्स कर देंगे it will be relaxed. It is just like a rubber. हम हमारी elasticity है, how much hard work we can put up. Otherwise, yes, look at the position that they are reading. We cannot see like they cannot read it. They are reading. Judge is of the मतलब my lord क्यों बोला जाता है? When we talk yes. about doctor, yes they are God. बट वी ट्रीट देम एज डॉक्टर. को हम फिर भी डॉक्टर करके ही बुलाएंगे. माई लॉर्ड मीन्स मेरा भगवान, मेरा गुरु. प्लीज अंडरस्टैंड, राइट? यस यस. या वो आप भी तो माई लॉर्ड है हम लोग के. जोक्स अपार्ट, इतना मैं तो नहीं पढ़ती हूँ, बट यस आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड. मतलब मुझे इंटरेस्ट आता है, अगर कोई टॉपिक पढ़ाना है तो आई शुड हैव सर्टेन केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स. थैंक यू. ओके मैडम, थैंक यू. या सो लीगल बाइंग ट्रांजेक्शन, प्लीज अंडरस्टैंड. जब आप इनको सेकेंड हैंड प्रोडक्ट या ऐसे किसी के साथ कंपेयर करते हो जिसमें बिल नहीं मिल रहा है, सो ऑल दैट इज नॉट वर्केबल देयर. तो आपके माइंड में सिर्फ वही एग्जांपल चलनी चाहिए कि जब आप गए हो, आपके पास बिल आया है, आपने प्रोडक्ट खरीदा है, तब आप ये कंडीशन एज टू टाइटल एप्लीकेबल होगा ही होगा. बट वहां एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पे आपको पता है दिल्ली में गफ्फार मार्केट है, that is dealing with the Chinese product. आपको दिखेगा कि एप्पल का ही फोन है, बट एप्पल में कुछ ऐसे स्पेलिंग सा हल्का सा चेंज कर देगा. फेयर एंड लवली क्रीम है, बट उसमें थोड़ा सा चेंज कर देगा. So those kinds of products are duplicate products. So pricing bills can never be claimed from the seller. So thereby seller की कोई responsibility नहीं है. Seller जहां पे बिल दे रहा है वहां पे ये assume कर रहा है कि yes the possession is genuine and transfer is genuine. राइट बच्चे? यस. इज इट क्लियर? कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब है कि सेलर हैज ए राइट टू ट्रांसफर इट. अदरवाइज अगर सेलर बिल नहीं दे रहा है तो उसका राइट नहीं है. कहीं ना कहीं वो बिल के साथ ऑथेंटिक ट्रांजैक्शन मानी जाती है, ऑथेंटिक बाइंग मानी जाती है. राइट बच्चे? यस मैम. ओके ओके. सो फर्स्ट इज कंडीशन एज टू टाइटल. यस. Now I'll cover conditions in the next class, right? Maybe आज मुझे third period भी आपका शायद लेना पड़े. Till the time I'm just going to show you one video, right, of the goods and of the conditions. Look at this video now.
2 मिनट के लिए रोकूंगी. जैसे existing goods already owned by the seller, please understand these are very much available in the hands of seller. Buyer sees those goods and buy the goods, right? Specific, identified and agreed upon the time when the contract is made. तो स्पेसिफिक गुड्स, कुछ स्पेसिफिकेशंस दे दी कि ये गुड्स ऐसे होने चाहिए, राइट? जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो बायर इज स्पेसिफाइंग दोज इंस्ट्रक्शंस. अनअसर्टेन्ड, नॉट आइडेंटिफाइड. जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था बायर वाज नॉट इन द श्योर पोजीशन कितनी क्वांटिटी लेनी है, किस क्वालिटी का लेना है, किस प्राइस रेंज में लेना है. तो कुछ भी अगर क्लियर नहीं है बायर को, that kind of goods are known as unascertained. I am just giving you example कि कुछ भी क्लियर नहीं हो सकता. जैसे कि क्वांटिटी कितनी लेनी है पता नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो ठीक है, मेरे पास जैसे ही ऑर्डर आएगा मैं क्वांटिटी प्लेस करूंगा. सो जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है बायर इज नॉट श्योर ऑफ क्वांटिटी, कितने गुड्स लेने हैं, कितने किलो लेना है, किस क्वालिटी का लेना है. दैट इज द केस ऑफ अनअसर्टेन. असर्टेन, यस, it has been identified, appropriated in terms of quantity, quality by the buyer, right? Future, which is yet to be manufactured, please understand, which is yet to be manufactured or acquired by the seller, right? Yet to be ready on the basis of customer requirements. Is it clear, bache? Yes, ma'am. So I'll show you this once we will cover up all the conditions, right? Yes. So yes, in case you have any doubt as to condition as to title, you may ask. Yes. No, ma'am. Okay. So as to title means seller must be having a genuine person to transfer the genuine ownership with a genuine bill. तो जहां पे 3 genuine आ जाएं, जहां पे genuine seller है, genuine product है और genuine bill है, तब माना जाता है कि that is condition as to title. सेलर को ऐसा ही करना चाहिए. जो सेलर बिल नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं गुड्स इज डैमेज, गुड्स इज सेकेंड हैंड, गुड्स मे बी ऑफ स्टोलन कैटेगरी. ओके बेटा. Second is condition as to description. As to description means अगर बायर ने कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई हैं, डिस्क्राइब किया है. डिस्क्रिप्शन का मतलब डिस्क्राइबिंग, राइट? व्हेन बायर इज डिस्क्राइबिंग समथिंग, describing any terms, condition is seller must fulfill that. उसने अगर कह दिया कि yes I need the product of this specification, तब सेलर को वो फुलफिल करना ही पड़ेगा. प्लीज अंडरस्टैंड. कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन मींस कुछ भी डिस्क्राइब किया है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन दी है अबाउट एनी टर्म कि आई नीड ए प्रोडक्ट वेयर बाय आई शुड गेट मिनिमम एवरेज स्पीड ऑफ दिस. मुझे कार ऐसी चाहिए जिसकी मिनिमम एवरेज फ्यूल कैपेसिटी या मिनिमम एवरेज फील्ड या फिर कार का कलर या कार की माइलेज कुछ भी स्पेसिफाई कर दिया, वो कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन हो गई, जहां पे बायर ने डिस्क्राइब किया है कि उसको कैसा प्रोडक्ट चाहिए. तो सेलर हैज टू फुलफिल दैट. सो इट इज इम्प्लाइड. जरूरी नहीं है लिखा ही हो. अगर उसने वर्बली भी बोला है कि यस आई नीड ए प्रोडक्ट ऑफ दिस कैटेगरी, मुझे डैंड्रफ फ्री शैम्पू ही चाहिए, तो डैंड्रफ फ्री इज बेसिकली डिस्क्रिप्शन बाय द बायर, डिस्क्राइबिंग कैपेसिटी ऑफ द बायर.
तो अगर उसने डिस्क्राइब कर दिया तो सेलर हैज टू गो बाय द डिस्क्रिप्शन ओनली। तो जस्ट लाइक फार्मास्यूटिकल, आप अगर मेडिसिन लेने जाते हो तो दे आर नॉर्मली चेकिंग आउट दैट मेडिसिन दैट इज रिकमेंडेड। तो आरएक्स करके जो मेडिसिन लिखी होती है, दे आर डिस्क्रिप्शन। जो पर्सन ले रहा है उसको मेडिकल नॉलेज नहीं है, बट जो डिस्क्राइब कर दिया, यस, that has to be provided by the pharmaceutical company, pharmaceutical medical practitioner. So description is the describing authority of the buyer, जैसा चाहिए। so अगर description मैच नहीं किया तो it will not be treated as valid condition, broken माना जाएगा। राइट बच्चे, कई बार आप डिस्क्रिप्शन दिखाते हो, वो कहते हैं कि सर ये वाली मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये सॉल्ट सेम है, शुड आई गिव यू? अगर आप अलाउ करते हो तो वो देता है, प्लीज अंडरस्टैंड। right? So that is description by the buyer, description by the authority, right bache? Yes, ma'am. Okay, I'll discuss another conditions with you. Maybe I have to take third lecture, right? So I'll take, if I take third lecture, I'll inform you by the message, right? And accordingly we'll cover all these conditions. Okay beta, thank you. Now Ma'am, your today? Yes, today. Maybe Preeti ma'am is absent today, so either me or Rahul sir will take that class. Okay, we'll inform you accordingly. Ma'am, Manisha ma'am also absent today. हाँ, मनीषा मैम, केबी सर ने तो ऑलरेडी ये दे दिया, मे बी आफ्टर 12 होगा, मतलब जो आफ्टर 2 होगा, जो 2 क्लासेस होता है ना, उसके वही होगा शायद। हाँ, जैसा भी होगा आपको एक मैसेज आ जाएगा। मुझे भी एक बार बोला है, मैं बैकएंड पे हूँ अवेलेबल, अगर मेरी क्लास लगती है तो आई विल कवर, अदरवाइज विल कवर दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा? Okay, ma'am, sure. ओके ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।